Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here. Welcome to another episode of Daily News Analysis. And how are you all guys? I hope आप सारे अच्छे होंगे. Hope you guys are doing well. So in newspaper analysis, as you know this is a very important session where we discuss about all the important aspects of the aspect of newspaper. And what exactly we discuss in the newspaper, like we discuss about international news, we discuss about national news, miscellaneous based news, summits and conference, personal news, science and tech and sports, economy. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, which is very important, and any amendments, any bills which is in the parliament. So this is very important, especially for the law entrance exam is concerned. And here is a quote of the day is, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is, as I told you, not each and every things in newspaper is important. Try to do one thing. जो भी आपका relevant चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर में, और वही सारी चीज़ें हम आज भी डिस्कस करेंगे. And we have taken initiative questions of the day. And why the question is important, at the end of the day you will going to appear in an exam, and that exam is must be based on the MCQs, which are multiple choice questions. So the students must be familiar कि आपको एग्जाम में क्या क्या questions जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, and what kind of things you need to keep an eye, and what are the important takeaways is important for your exam perspective. चलिए शुरू करते हैं. Just a second. So here is the very first article. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेडलाइंस ऑफ द डे, और आज की हेडलाइंस है कि इंडियाज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी हैज स्लिप्ड इनटू डेफिसिट. फ्रॉम द डेफिसिट मतलब नुकसान. For the first time this financial year, after the Reserve Bank of India temporary liquidity withdrawal move and tax outflows, Neelkant Mishra ne reportedly appointed by Union government as part-time chairperson of UIDAI, it means Unique Identification Authority of India. So इनका नाम क्या है? नीलकांत मिश्रा. And it's a UIDAI is a nodal body in charge of issuing Aadhaar numbers. SBI के chairman है दिनेश खारा, is likely to get an extension until August 2024, giving him almost another year at the helm as the current tenure to end in October. उसके बाद है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC announced that it has acquired 6.660% shareholding in Geo Financial Service, that demerged financial entity of Reliance Industry that made it stock debut. So ये जो LIC है उसका अनाउंस किया acquired 6.660% shareholding in Geo Financial Service. उसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडलाइंस में श्री राजेश अग्रवाल, एडिटर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिप्रेजेंटेड इंडिया 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर. इसके बारे में बहुत डिटेल में मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, हम डिस्कस करेंगे. प्लीज़ कीप पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस important newspaper analysis series. And 20th ASEAN India Economic Ministers meetings held on 21st August 2023 in Semarang, Indonesia. आपसे टू द पॉइंट पूछेंगे MCQ में क्वेश्चन. 20th ASEAN India Economic Ministers meeting कहाँ पे हुई थी? That was 21st August 2023. That was Indonesia, and co-chaired and meeting with Dr. Zulkifil Hassan, Minister of Trade, Indonesia. नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव अप्रूव्ड द फर्स्ट रेस्पिरेटरी syncytial virus vaccine for use in women during pregnancy to protect the baby. Pakistan President Arif Alvi denied signing the Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 into law due to its strong disagreement with the legislation. The Saudi Environment Ministry has launched a program to combat desertification using artificial intelligence. 2023 edition of Defense Correspondence Course DCC, or 3-week course conducted by the Ministry of Defense for select journalists from national and regional media organization, commenced from Eastern Naval Command, Visakhapatnam on 24th August 2023. Chairman जो इसरो के हैं डॉक्टर S. Somanath met Atomic Energy and Space Minister Dr. Jitendra Singh से, has appraised him about the status of Chandrayaan 3 for the moon landing. और आज मेरे दोस्त चंद्रयान 3 की आपकी मून लैंडिंग होने वाली है.
The first tropical storm to hit Los Angeles to more 80 years unleashed floods across part of South California. Shri Giriraj Singh, Indian Minister of Rural Development and Panchayati Raj, inaugurated 3-day national thematic workshop on localization of sustainable development SDG in Panchayati Srinagar. और पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले हमारे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? राजस्थान ने इनिशिएटिव ली थी. Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG has released the 5th edition of National E-Governance Service Delivery Assessment NESDA Way Forward monthly report of states in UT, which provides a detailed overview of the status of e-service delivery across state and UTs. TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, has issued recommendations, license fee and policy matters to direct-to-home services. The Employees Provident Fund Organization EPFO recorded an impressive growth of 17 lakhs and 89,000 net members in June 2023. NHPC Limited, India's leading hydropower company, has entered into a MOU Memorandum of Understanding with RITES Miniratna Schedule, central public sector undertaking under the Ministry of Railways. India junior men's hockey team secured a resounding victory over England, emerging triumph with a score line of 4-0 in the four-nation tournament held in Düsseldorf, Germany. Or International Day for the Remembrance of Slave Trade and Abolition is celebrated on 23rd of August every year. तो ये था आपका headlines of the day, and now we discuss the very important article. So on a smartphone manufacturing in India, what are the important takeaways you should know about it? Why have the former Reserve Bank of India Governor and the Minister of State for Electronics been loggerheads with each other? Why are the key features of the production link incentive PLI schemes, and why are low-level assembly jobs not good in the long run? So in short, over the last few months, from RBI Governor Raghuram Rajan and the Minister of State for the Electronics Rajiv Chandrasekhar have spared over how well a central government schemes to boost electronic manufacturing has been faring. What happened? Exactly हुआ क्या था इसमें? It started when Mr. Rajan, along with two other economists, released a brief discussions paper arguing that the program is not really pushing India towards becoming a self-sufficient manufacturing powerhouse, and that create an ecosystem of low-level assembly jobs that will still depend heavily on imports. पहली चीज़ आप ये समझो बच्चे कि PLI schemes क्या होता है. So around 5 years ago, Government of India declared it wanted more companies to make high in India. Manufacturing is a key ingredient to economic growth and also comes with the economist call a multiplier effect. Every job created and every rupee invested in manufacturing has a positive cascading effect on the other sectors in the economy. However, the problems was that many industries did not want to set up shop in the country. India ka infrastructure is not great, and the country labor laws are archaic, and the workforce is not very skilled. To solve this, the government uses a carrot and stick approach. The stick is, raising imports, right? Duties that make it more expensive for companies to import stuff from somewhere else and sell in India. And the जो carrot होता है आपका, that is provide subsidies and incentives. So the production link schemes, the government gives money to foreign or domestic companies that manufacture goods here, right? वो हमारा होता है PLI schemes, production link incentive. And production link incentive government क्या करती है बच्चे? मनी देती है to foreign और domestic companies को to manufacture goods here, इंडिया में manufacture करने के लिए. आपको पता है कि हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर. प्राइमरी सेक्टर जो हमारा सिंस द ब्रिटिश टाइम अगर आप देखो तो आपका जो दैट इट वाज मशरूमिंग थ्रू आउट द कंट्री, आपका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, वी आर टू मच लैकिंग बिहाइंड इन सेकेंडरी सेक्टर इज कंसर्न विच इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. और इसके लिए वी कैन नॉट ब्लेम टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज समवेयर द रीज़न इज mentioned or hidden in the past time.
Since the time of Britishers, India was a land of exports that became a land of imports. That was the main reason why we are lagging behind too much in the secondary sector. It's completely you should to know about it that government take many initiatives to promoting and to welfare of the secondary sector. But you should know about that the reason is in the lies in the past, which is in the British time, that we are doing each and every efforts for promoting the secondary sector. And the third one is tertiary, which is service sector. So the PLI होता है जहाँ पे गवर्नमेंट्स मनी देती है फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज को. मेक श्योर ये फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी दोनों को देती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए. टू एनुअल पे आउट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फॉर अप टू 5 years. एंड कंपनी लाइक माइक्रोमैक्स हो गया आपका, सैमसंग, फॉक्सकॉन विच मेक्स phone for apples, and can get up to 6% of their incremental sales income through the PLI programs. And with the schemes, mobile phone exports jumped from $300 million in financial year 2018 and astounding $11 billion in financial year 2013. But India import mobile phones worth $3.6 billion in financial year 2018. It dropped to $1.6 billion in financial year 2023. Central government ministers, including Mr. Chandrasekhar, have regularly cited the data as a proof of PLI scheme success. And why Mr. Rajan is arguing? Because Mr. Rajan contended that while import of fully put together mobile phones have come down, and the import of mobile phones components including display screens, cameras, batteries, and printed circuit boards shot up between financial year 2021 and 2023. What is the minister saying? Mr. Chandrasekhar, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई कि that is wrongly assumed that all imports of screens, battery, etc. used to make mobile phones. It is possible these items are used also for the computer monitors, DSLR, cameras, electric vehicles, and उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि not all mobile phones production in India is supported by the PLI schemes. Around 22% is so far. And the said ministers has admitted that the value addition, how much work is Indian mobile production plant is actually doing in creating the finished product. And who is right? Obviously we should not to be argued, but PLI schemes की आपको शॉर्ट में ये चीज़ पता चलेगी कि आपको जब फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है उसके बारे में, और इंडिया का क्या रोल है इसमें PLI schemes में. Now we moving to the next one, the BRICS test. ये group of nations, right? And British test for India multipolarity rhetoric. तो यहाँ पे rhetoric which means यहाँ पे बात हो रही है कि जितने सारे इसमें इंडिया का जियो पॉलिटिकल चॉइस है आज के टाइम में इज नीदर क्रिस्टल क्लियर और नॉट ईजी टू मेक, राइट. उसमें ब्रिक्स नेशन, SCO समिट, G20, G7 एंड जो बाकी जियो पॉलिटिकल जो क्वाड है, तो इसमें क्या रोल है हमारा वो इसमें मेंशन की हुई है. एज वी नो दैट वंस अगेन, so India is back in the thick of global geopolitics of things, chairing summits, navigating tricky choices. यहाँ पे here we are BRICS nation. BRICS में कौन कौन से नेशन? पहला आपका हो गया यहाँ पे B stand for Brazil, and next R for Russia, I for obvious अपना प्यारा देश भारत इंडिया, and C stand for what? China, and S for South Africa. ये इसमें है, सबसे लास्ट में ही ऐड हुआ ब्रिक्स नेशन में. सो ब्रिक्स एंड वी कैन से फ्रॉम अगस्त 22 से अगस्त 2024 पे ब्रिक्स समिट्स होंगी, राइट. एंड दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस टेस्ट फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी एंड अ हार्बिंगर ऑफ शेप एंड जियो पॉलिटिक्स टू कम. एंड फॉर श्योर the ability of BRICS to reorder or state of global economy in any significant manner is deeply suspect. So in short, its historical capability to influence global geopolitical overestimated, and as a bloc it is hardly an attractive investment destination. And बात करें BRICS nations के बारे में, that today sound much more revisionist and reactive. So the geopolitical development of the past year or so and the challenge faced by the United Nations systems may have given another lease of life to BRICS. And that are the many paths of global governance. So the global governance has failed, or that it sorry.
या सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, या मेनी पाथ्स टू ग्लोबल गवर्नेंस हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ब्रिक्स है दैट विल इनवेरिएबली फिल सच इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वैक्यूम नो मैटर हाउ inadequate. So 40 odd countries have formally or informally expressed interest in joining the expanded BRICS nation. Ukraine war and steady rise of China has clearly provided a new lease of life to the otherwise moribund BRICS. So what for India, अगर मैं बात करूँ geopolitical choice की, so international politics should not be place of political hegemonies perfection but of democratic imperfections. If you talk about our role, is that for India the geopolitical choice today are neither crystal clear nor easy to make. And why it's so? Because for one, where does India belongs to the global geopolitical landscape? For instance, a tendency to the West to view India membership of BRICS and the SCO Shanghai Cooperation Organization in the context of Ukraine war and the United States. So it is the obvious repeated questions. How can India be a part of CUET? इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड नेशन में आपके सब कौन कौन से नेशन है? सो ऑब्वियस आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है एंड यूएस है. इट इज क्वाड नेशन. G20, G7 and BRICS. So SCO and Global South at the same time. That is deeply northwestern multilateral forums such as BRICS. SCO and Global South must be seen as India's response to the undemocratic and inequitable governance structure of post Second World War institution. It means जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसी टाइम एस्टैब्लिश की गई थी. एट द सेम टाइम इंडिया ऑब्जेक्टिव इज नॉट West Bloc or East Bloc, meaning that should not be belongs to anti-US or West Bloc either. So development, अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो historically and geographically India belongs to BRICS, SCO and Global South, but India does not only belongs to them. और ये जिसमें चाइना का जो प्रेजेंस है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है, that to make it less than perfect geopolitical choice for India, right? And India अगर बात करें एज ए रिजल्ट is located right in the middle of the emerging geopolitical fault line with interest of either side, welcomed by either side but fully belonging to neither side. This could either make India a bridge between a great divides, or its lack of loyalty to neither could make it victim of emerging geopolitical contentions. So no doubt जो हमारा एक multipolar world है requires strong alternative global forums, perhaps even attempt to de-dollarizations, right? But those very forums will go ahead and rise of China and the strengthening of the China's economy as well. So अगर बात करें de-dollarizations की, that would lead to strengthening of the rupees is delusion as a belief that China and India share larger geopolitical interest. So there are many challenges. What should be the way forward? India must therefore keep its eye firmly fixed on the goal, promote more representatives and equitable global governance on the one hand, and ensure that such order does not end up undercutting its own national interest. Now we move to the next article. How to govern data. इसमें आप that we have discussed many times about digital personal data protection bill. This is called digital personal data protection bill. Just a second. Data protection bill. इसमें the main the issues is going on क्योंकि आपका एज ऑफ कंसेंट जिसके बारे में बात चल रही है इसमें. सो राज्यसभा में भी पास हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट? बिकॉज इसमें आपने देखा होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे इस टाइप के लॉस हैं. So India's approach is likely to encounter a few speed bumps, and for
started inclusion of vague qualitative parameters such as risk to electoral democracy and public order are likely to make a process imprecise due to lack of an objective criteria or any tangible metrics for such designation. So इसमें जो आपका another aspect है of the law that seems and designated telecom dispute settlement and appellate tribunal TDSAT and ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन की हुई है और वो हम इसमें जब तक कोई बिल का आउटकम नहीं आएगा वी नॉट डिस्कस मच इन डिटेल. चंद्रयान 3 रिवील्स डार्क साइड ऑफ द मून. सो इसमें आपको जो याद रखनी है वो है कि शेड्यूल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून ऑन वेडनेसडे, जो आपके इसरो हैं उन्होंने रिलीज का इमेज ऑफ द फार साइड ऑफ लूनर सरफेस की. The far side is also known as the dark side of the moon and it is always hidden from the earth. ये अर्थ से हमेशा हिडन होती है. And the images were captured on the August 19 by, आपका इसमें ये याद रखो किससे हमने चंद्रयान 3 की इमेज कैप्चर की थी, LHDAC. So L stand for obvious, क्या होगा आपका LHDAC, Lander Hazard Detection and Avoidance Camera, right, that on board the lander. So while one of them was taken by the lander position detection camera LPDC. इसके बच्चे हमेशा ये ध्यान रखना कि ये आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं. प्रीवियस अगर आप क्वेश्चंस देखें तो आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं विथ रेफरेंस टू चंद्रयान 3. वाई द वर्ड LHDAC स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज LPDC स्टैंड्स फॉर. तो आपका उसमें क्या हो जाएगा, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा. दिस इज कॉल्ड लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा. दैट इज अ फुल फॉर्म. अभी आपने देखा होगा कि रशिया का जो था लूना 25 दैट वाज क्रैश्ड इनटू द मून ऑन सैटरडे, राइट. सो उसके बाद है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन कि आसियान नेशन जो है दैट अग्री टू रिव्यू गुड ट्रेड पैक्ट बाय 2025 टू फिक्स्ड एजिमेट्री. इंडिया एंड आसियान sorry, try to reach an agreement to purview their free trade pact for goods and set a 2025 goal spot for the concluding a review aimed at addressing. So एक joint committee थी आसियान इंडिया ट्रेड का जिसमें की बात की गई थी गुड्स अग्रीमेंट की, right, that was signed in the year of 2009. So what are the importance of the ASEAN nation is concerned. So यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे तो आसियान इंडिया का जो इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग्स है दैट वाज हेल्ड इन द प्लेस इन इंडोनेशिया. द प्लेस नेम शुड बी इम्पॉर्टेंट, इंडोनेशिया मूवी. And AITGA, which means ATIGA, that view now the India ASEAN leaders summits होंगे that schedule in the September for further guidance. और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा द बेसिक निटिग्रिटी जो आसियान नेशन के बारे में, which is what this one. So इंडिया आसियान के रिलेशंस के बारे में बात करें यहाँ पे, so it is एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इंडिया क्यों नहीं मेंबर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछी, बहुत सही सवाल है कि वाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान नेशन. बिकॉज इट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बिकॉज ऑफ इसका रीजन है ज्योग्राफी. इंडिया इज नॉट इन द साउथ ईस्ट पार्ट, राइट, दैट्स वाई इट्स इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान. ये एक रीजनल ग्रुपिंग है दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. इसको इस्टेब्लिश की गई थी अगस्त 1967 में इन बैंकॉक, थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन. इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं. एंड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. इट्स चेयरमैनशिप रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द English names of member states. So ASEAN brings together 10 Southeast Asian states: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam into one organization. How has been the ASEAN-India relation? So ASEAN-India dialogues relations, so they started with the establishment of a sectoral partnership in 1992. And this graduated to full dialogues partnership in December 1995 and summit level partnership in 2002. Next is asking about SC to constitute a new bench to hear Kaveri water issue. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Monday assured Tamil Nadu that he would constitute a bench of, और ये same article हम कल भी हमने डिस्कस की थी न्यूज़ एनालिसिस में, like
बिफोर द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी, उनकी क्या क्या चीज इश्यूज थे इसके बारे में, कि स्टेट का ये कहना है कि द लीज ऑफ जो वाटर है दैट इज यू कैन सी इट इज डायर नेसेसिटी टू मीट द प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स। एंड तमिलनाडु ने अर्ज किया था कोर्ट को कि डायरेक्ट कर्नाटका टू इंश्योर द स्टिपुलेटेड रिलीज ऑफ 36.76 जो आपका मीट्रिक टन है अंदर कावेरी ट्रिब्यूनल अवार्ड मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट 2018। तो इस पर अभी डिबेट चल रही है कावेरी रिवर के बारे में। नाउ इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसमें एनएसओ जो डेटा रिलीज़ करती है, जीडीपी डेटा रिलीज़ करती है, विच इज़ एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हमारे इंडिया में रिलीज़ करती है क्वार्टरली डेटा ऑफ आर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका डेटा रिलीज़ करती है एनएसओ। आपको पता है कि 2019 में इसको मर्ज किया था एनएसएसओ एंड सीएसओ विच इज कॉल्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following amendments to the constitution has lowered the voting age of elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of state from 21 years to 18 years? And the answer is, options are 47th amendment, 52nd amendment, 61st amendment and 69th amendment. ये चार options हैं आपके सामने, think about. So it's obvious the answer is 61st amendment. So the parliamentary panel has suggested lowering the minimum age for contesting in assembly elections from 25 years to 18 years, and 61st amendment of the Constitution of India, officially known as Constitution 61st Amendment Act 1988, that lower the voting age of elections to the Lok Sabha and to legislative assemblies of a state from 21 years to 18 years. Moving to the next one, विवाद से विश्वास scheme, sometimes seen in the news, ये किससे related है? That was pension schemes for the व्यापारीज, partial credit guarantees for NBFCs, non-banking financial corporation जैसा आपका मुथूट फाइनेंस है, direct tax dispute resolution, enhance loan availability for exporters. So this one is for the partial B option, C option राइट आंसर है। टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स को लॉन्च किया था। विवाद से विश्वास 2.0, विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू रिजॉल्विंग कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, UPI, and UPI has been developed by the RBI, NIC, NPCI, Niti Aayog. So the right answer is NPCI, National Payment Corporation of India. So a unified payment system UPI powers multiple bank accounts into a single mobile application or any participating bank, merging several banking features like instant transfer of funds, bill sharing facilities. It has been developed by National Payment Corporation of India, which is NPCI.
नेक्स्ट है आपका द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC that separates India controlled territory from Chinese controlled territory passes through which of the following state or states? Ladakh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh, all of the above states. So LAC and LOC, line of actual control that demarcates India controlled territory from China, and LOC, line of actual control that is from India and Pakistan. So right answer would be all of the above state. So the LAC जो है आपका वो सेपरेट करता है इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, और इसको डिवाइड करता है ईस्टर्न सेक्टर दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, मिडिल सेक्टर आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल, एंड वेस्टर्न सेक्टर जो आपका लद्दाख का है. और इंडिया और चाइना दैट इज डू नॉट अग्री ऑन द LAC. So in the eastern sector, the alignment of LAC is along with the Mahon line. Initially it was demarcated. जैसे आपका इंडिया एंड पाकिस्तान का है रेड क्लिफ लाइन. रेड क्लिफ लाइन that demarcates border between India and Pakistan. So which take is named from Sir Henry McMahon, Foreign Secretary of British India, who drew the 890-kilometer lines as the border between British India and Tibet as 1914 Shimla Convention between Great Britain, China and Tibet के बीच में. Now we reach the last question. इसमें आपको ये बताना है कि which of the following statements about mosquitoes is true? Mosquitoes are arachnids. Only female mosquitoes bite humans and animals. Mosquitoes primarily feeds on plants. Mosquitoes are not vector for any disease. Obvious आपका आंसर है बी ऑप्शन. आर्कनिड्स विच मीन जिसके विंग्स होते हैं उसके लिए बात करते हैं. 2 विंग्स वाले जो होते हैं विच मीन्स दैट इज नॉट टू बी आर्कनिड्स. सो मॉस्किटोज आर वेक्टर फॉर मेनी डिजीज इंक्लूडिंग मलेरिया, डेंगी, येलो फीवर एंड जिका वायरस ऑल्सो. So this is all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot, and we'll meet you tomorrow for the newspaper analysis session. And if you have any questions regarding this session, please let me know in the comment section, right? And please share this video to your friends so that they will get advantage. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned, we'll meet you tomorrow. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें. Bye bye and take care till then.